आज जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है न्यूप्लेजिया। एंड ये सारे पॉइंट्स मैंने रॉबिन्स में से ही लिखे हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं रॉबिन्स में से। इस वीडियो में मैं सिर्फ सारे पॉइंट्स की इंट्रोडक्शन दूंगी। बाकी जो दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें एक एक टॉपिक ब्रीफली डिस्कशन करूंगी। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे फोकस करते हैं। ओके, नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूप्लासिया, स्टडी ऑफ कैंसर। व्हाट इज न्यूप्लाज्म? न्यू means new, plasm means growth in tissue. So new growth tissue, it's called neoplasm. All tumor have a two basic components. First is neoplastic cell, tumor parenchyma, and second is reactive stroma made up of connective tissue, blood vessels, and variable number of cells. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर है ना, मीन्स नॉट स्प्रेड टू द अदर साइड, वो स्लो ग्रोथ है। एंड मलिग्नेंट ट्यूमर है, वो स्प्रेड टू अदर साइड। ओके, एंड मिक्स ट्यूमर वो डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल टिश्यू टाइप्स, बाइफेजिक ट्यूमर कहते हैं। ओके, characteristics of benign and malignant neoplasm. Differentiation and anaplasia means anaplasia को differentiation करना है। Like anaplasia two types के, benign and malignant. Benign tumor well differentiate होगा and malignant tumor poorly differentiate होगा। ऐसे हमें differentiate करना है। And can a local invasive cancer has spread to nearby a tissue or any organ. And third है metastasis, means the spread of cancer cell from the place where they first formed to another part of the body. और इसके pathways भी है, pathways of spread, वो भी हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स में हम ग्रुप ऑफ एजेंट्स एंड यूजेस देखेंगे। एंड ह्यूमन कैंसर फॉर विच रिस्पॉन्सिबल एविडेंस इज अवेलेबल, एक्वायर predisposing condition के divided into three parts: chronic inflammation and cancer. So cause and effect relation between chronic inflammation and cancer. Okay, and second है precursor lesion and cancer. इसमें कार्सिनोमा इन situ means बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ओके, एंड थर्ड है इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट एंड कैंसर, मीन्स उसमें है डेफिशिएंसी ऑफ टी सेल। डेफिशिएंसी ऑफ टी सेल होगी तो इम्यूनिटी कम होगी, मीन्स कैंसर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिफ्थ है जेनेटिक रोल ऑफ कैंसर, मीन्स जेनेटिक्स का भी पार्ट है कैंसर में। एंड सिक्स्थ है हॉलमार्क ऑफ कैंसर, display it fundamental changes in cell physiology which are considered the hallmark of cancer. Oncogene means gene that promote autonomous cell growth in cancer. Autonomous means हमारी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता, and a gene which in certain circumstances can transform a cell into a tumor cell. Oncoproteins are proteins encoded by oncogenes which are involved in the regulation or synthesis of protein linked to cancer tumor cell growth. Oncoprotein में हमने रिसर्च की तो पता चला एंटीबॉडी दैट कैन डायरेक्टली target the oncoproteins inside the cancer cell and suppress the aggressive cancer growth. Proto-oncogenes means some level in signaling pathway. Mutation changes in a proto-oncogenes may cause it to become an
oncogenes which can cause the growth of cancer cell. It's called proto-oncogene and it derived proliferation. What is tumor suppressor gene? Is anti-oncogenes is a gene that regulate a cell during cell division and replication. Cell growth uncontrolled. It will result in cancer, loss or reduction in its function. And the Warburg effect means increased rate of glucose uptake and increased conversion glucose to lactate means fermentation via glycolytic pathway and it condition like glucose hunger. 11 है apoptosis evasion of programmed cell death, inactivation of growth suppressing tumor suppressor gene but also from the mutation in the gene that regulate apoptosis. The stem cell like properties of cancer limitless replicative potential. All cancer contain cells that are immoral and have limitless replicative potential, acquired immortality. Angiogenesis means development of new blood vessels. Even if a solid tumor processes all of the genetic aberrations that are required for malignant transformation, it cannot enlarge beyond 1 to 2 mm in diameter unless it has the capacity to induce angiogenesis. How do growing tumor develop a blood supply? That angiogenesis is controlled by a balance between angiogenesis promoters and inhibitors. In angiogenic tumors, this balance is skewed in favor of promoters. 14. The invasion and metastasis. Invasion means tumor cell expand into environment, means any way of tissue and organs. Metastasis means breaking away from the primary tumor, migrating a new location, secondary tumor in the new environment, means any from tissue and organs. Invasion of host defense means host defense से बचना. Genomic instability. Genetic aberrations that increase mutation rate are very common in cancer and mutations that are required for transformation and subsequent tumor progression. कैंसर इनेबलिंग इन्फ्लामेशन मीन्स इसमें हम इन्फिल्ट्रेटिंग कैंसर में क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस देखेंगे एंड 18 है dysregulation of cancer associated gene, the genetic damage that activate oncogenes or inactivate tumor suppressor genes. मल्टी-स्टेप कार्सिनोजेनेसिस में है multiple mutation that act in ways to produce a fully malignant tumor. उसमें है एक्टिवेशन ऑफ RAS, इनएक्टिवेशन ऑफ RB, इनएक्टिवेशन ऑफ P53, इनएक्टिवेशन ऑफ PP2A and constitutive expression of telomerase. कार्सिनोजेनिक एजेंट एंड देयर सेल्यूलर इंटरेक्शन, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं. केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस, इनडायरेक्ट acting carcinogens, radiation carcinogenesis and microbial carcinogenesis. 21 है clinical aspect of neoplasia, उसमें है paraneoplastic syndrome is most common and diagnosis and all histological cytological method है.
क्लिनिकल एस्पेक्ट में है ग्रेडिंग, फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, एंड लास्टली है ट्यूमर मार्कर्स. Tumor associated enzyme, hormones, and other tumor markers in the blood cannot be used for definitive diagnosis of cancer. Bye, guys.